has a defined value for every frequency component. Okay, the Fourier transform can be viewed as the limit of Fourier series of a function with a period that approaches to infinity. So the limits of the integration changes from one period to minus infinity for one period, from minus infinity to प्लस इन्फिनिटी. सो पहले हम टाइम पीरियड के अंदर जब एनर्जी कैलकुलेट करते थे तो एक के लिए कैलकुलेट कर लेते थे और फिर एवरेज ले लेते थे. सो दैट वाज द प्रीवियस एनर्जी मेथड. इसमें क्या होगा, एक ही टाइम पीरियड होगा लेकिन उसको हम किस तरह कैलकुलेट करें, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. लेप्लास में किस तरह करते थे, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी करते थे. तो यहाँ पे लेप्लास का 2 टाइम्स है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इट इज अ 2 टाइम्स ऑफ द लेप्लास. Okay, going to the next slide. So Fourier versus Laplace. This is important. It always comes in some high profile tests. So just learn these basics and you will have a lot to say on those tests. Then, okay, interviews, etc. Fourier versus Laplace. Fourier series is not comparable to Laplace transform. Series is not comparable to transform because series is for periodic signal and transform is for aperiodic signal. So not comparable. The Fourier transform is comparable with Laplace transform. So periodic nahi balki aperiodic Fourier is comparable to Laplace transform aperiodic. Laplace is used for real world signal, whereas the signal starts at t equal to 0 or t greater than 0. हम Laplace किस तरह करते, जब भी हम इंटीग्रेशन लेते थे from 0 to infinity f of t e power minus j e power minus st डी टी, जिससे हमारे पास एस की वैल्यू आ जाती है इक्वल टू एफ ऑफ एस. सो 0 टू इंफिनिटी हैड दीज कंडीशन फॉलोड. अब हमारे पास ये जो फोरियर है इसमें हम ये एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, तो ये एफ ऑफ एस से एफ ऑफ ओमेगा बन जाएगा. अच्छा, Laplace has both decaying attenuating components and complex frequency component called S. So S is equal to sigma plus j omega. So this sigma is decaying or attenuating component. It can also be negative, in which case the negative decay is actually gaining component or amplification component. So we call it decay component, but it can have positive or negative effect on decay. Complex frequency component, the j omega. So Fourier has only one of it. Fourier and Fourier series and transform both only use the complex frequency. So we have omega, but we do not have this sigma. So we say that, let's say if a signal is like this, it is not like this. So it is not a decaying signal, it will always be like this. And what we will do, we will have many signals like this. So we say this is our first signal, this is our second signal, third signal. So we have individual signals with 1 omega, 2 omega, 3 omega components. We do not have such cases in which we use this sigma. So it is always periodic, so always has frequency component and do not have any attenuation component. We do not calculate the mathematical attenuation component. Fourier analysis is always done for a periodic signal. If ये हम deal कर चुके हैं, let's summarize it. If a signal is non-periodic, we consider this to be periodic between minus infinity to plus infinity. If a signal is purely periodic with finite period, we develop its Fourier series, not
transform. If a signal is periodic having time period of infinity, periodic with time period of infinity means ये कौन सा सिग्नल है, aperiodic है actually. We develop the transform version of Fourier as Fourier transform. So this is the summary of the Fourier versus Laplace. So coming to Fourier series, Fourier series is always calculated for purely periodic function, means we know the T naught and we put this n in it such that it represents its first period, second period, third period. So it is periodic and f of t will always be equal to f of t plus n t naught. First t naught, second t naught, सारे periods के दरमियान जब हम f of t फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वही पुरानी वाली होगी जो पहले f of t की थी. So let's say this is our function. So जो वैल्यू यहाँ पे f of t पे है वो f of t plus t naught पे भी होगी, क्योंकि ये जगह क्या है, t naught है. 2t naught पे भी यही होगी, 3t naught पे भी यही होगी, 4t naught पे भी यही होगी. So we are having same value after every time. And what will be the component wise Fourier transform, Fourier series of it? It will it has an a naught and all the discrete component of frequencies ranging from first component to infinity component. So these are the components of the frequency. You put this thing here and get this d naught for every component, and we write it as a naught plus 5 cos of omega t plus 3 cos of 2 omega t plus 1 cos of 3 omega t. इस तरह आखिर में 0.0001 cos of 500 omega t. तो इस तरह की एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है. And you can see that every component of this signal is periodic. एक की frequency omega है, दूसरे की 2 omega, 3 omega, 500 omega. So if we draw this thing on a page, we can say that this is omega, this is 2 omega, 3 omega, 4 omega, 4 or 5 omega. So सिर्फ first omega पे इसकी value क्या है, magnitude 5 है, second omega पे 3 है. So 5, 3 और फिर let's say 1 और यहाँ पे क्या है 0.001. So these are the discrete graphs of this frequencies component, and these all frequency component are called frequency component because they are periodic in nature. We will calculate these things. Okay, this type of series is known as the trigonometric series. We can also write down the exponential Fourier series. In that case we will have a DC value and we will have components from minus infinity to plus infinity, and it will have an n omega naught t as exponent. So here we calculate this c. If we make this n not equal to 0 and a naught included in the equation becomes cn from minus infinity to plus infinity. So now there is one cn, and this cn has c0 plus c1 plus c minus 1 plus c2 plus c minus 2 सारे उसमें आ गए. So this is just for understanding कि हम इस इक्वेशन को अलग अलग भी लिख सकते हैं और कंबाइन भी लिख सकते हैं. Coming to the next slide, the derivation of trigonometric Fourier series from exponential Fourier. So we discussed that the exponential Fourier series is a naught plus these things. तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. अगर हम इस तरह करें कि इसको उस cos थीटा में कन्वर्ट करना चाहे तो एक्सपोनेंट में क्या क्या होता है, cos भी होता है और साइन भी होता है. अगर हम सिर्फ इसका रियल कैलकुलेट करें तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट दिस cos कंपोनेंट. सो अगर हम इससे वही cos कंपोनेंट बनाना चाहे तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द रियल of this thing. Okay,
और एक दूसरा काम ये करेंगे, चूंकि ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो 2 दफ़ा हम ये Cn कैलकुलेट कर रहे हैं, C ऑफ 1 एंड C ऑफ -1, 2 -2। तो अगर इसकी जो वैल्यू है वही इसकी भी होगी, बिकॉज e पावर j ओमेगा e पावर माइनस j ओमेगा दोनों का जो कोफिशिएंट है ये वही 1 1 है, तो दिस विल एड अप। तो क्या बन जाएगा इसका कोफिशिएंट 2। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती c और यहाँ पे c, तो ये क्या बन जाता, 2c बन जाता। सो दिस इज द स्टेप कि हम इस इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे इसको तो हमने बाहर निकाला हुआ है, सही है। तो दिस इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये सारा आप नेग्लेक्ट कर ले, बस इसकी जगह यहाँ पे लिख ले 2cn। तो 2cn मीन्स कि 1 टू इन्फिनिटी 2 दफ़ा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 दफ़ा। ओके, दिस 2cn is written as an minus jbn. Why is it so? It is because if we write the exponential form of sine and cos, we get what? We get e power j omega as sine omega j और plus cos omega। तो यहाँ पे पहले से हमारे पास j है, अगर वही j ये असल में ये चीज़ है, सही है। अगर वही j इसके साथ इंटरेक्ट करे तो रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, इमेजनरी के साथ, बिकॉज वी आर सेइंग दैट दिस थिंग इज रियल। सो ये क्या बन जाएगा, इससे प्लस बन जाएगा। सो वी वांटेड दिस प्लस, सो फॉर दैट प्लस we said that Cn is an minus jbn. So this is just a mathematical representation। आप इसको प्लस माइनस जो भी लिखें, इससे इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, but it will make our things easier if we write this thing as minus j। And this thing is the exponential form, this one is the trigonometric form। So what we calculate for trigonometric form, an, bn and n0। The second thing is the exponential form। For the exponential form, we just calculate this Cn. So only we have to calculate Cn. So how we calculate an, bn and Cn? Cn is for exponential, remember that. An, bn, a0 is for trigonometric. A0 is also for exponential, but sometimes we use it, sometimes we don't. Okay, so let's dig into this topic, that how to calculate the trigonometric Fourier series. So we discussed its general format, that trigonometric series is A0 plus summation of all the cos component and summation of all the sine component। सो इसमें हमने वैल्यूज पुट करने हैं, 3 वैल्यूज हमने इसमें पुट करने हैं, एक A0 पुट करना है, एक an और दूसरा bn पुट करना है। सो A0 is the average value। How we calculate average? We take a part of a signal, this is important, just keep this thing in mind। We take a part of a signal and then we take its average over that part। So let's say we are having this wave, we took this part from it for a t0 time, we added each and every component of this wave। किस तरह हमने इस wave के component add करने हैं? By continuous integration। So हम continuous integration लेते हैं उस function की, और time कितना रखते हैं, from 0 to t0। तो इससे इसके सारे components आ गए हैं, हमने average निकालना है, so 1 over t0 पे इसको डिवाइड कर लें। So this is how we calculate the average। So A0 of that signal would be from any point to a point that is 1 period apart। So अगर हम t0 को 0 पुट करें तो क्या बन जाएगा, 1 over t from 0 to t0। So this is how we calculate the A0। How will we calculate the an? So an is actually calculating the cos terms।
सो cos टर्म्स हर इक्वेशन में कितने हमारे पास होते हैं?